Hi and good afternoon, everyone. Welcome to Supergrads. Just give me a confirmation if everything is fine. Seems like it is. And we are ready to go, students. So here we are in the second week of this series. First week में तीन चार topics मैंने आपके साथ discuss किए. And similarly in the second week, I'm here with four good topics. Noun, pronoun, adjective, article. तो ग्रामर की बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं. ग्रामर अभी तक अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो ग्रामर एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं थे. जस्ट जस्ट टॉकिंग अबाउट सीयूईटी 2023 में ग्रामर के क्वेश्चंस थे, बट 24 25 में देयर हैव बीन जस्ट वन और टू क्वेश्चंस ऑन ग्रामर. सो दैट इज व्हाट द सिलेबस हैज बीन फॉर ग्रामर. अब आज जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट नाउन्स स्टूडेंट्स. एंड ऑफ कोर्स when we have this CUET sessions, यहाँ पर हम ये बात नहीं करते हैं कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन हम पढ़ रहे हैं, या हम मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर पढ़ रहे हैं, या हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. नाउन्स, व्हेन आई से आई एम टीचिंग नाउन्स, आई मीन नाउन्स के वो इंपॉर्टेंट रूल्स, वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आपको दिख सकते हैं. सो दैट इज व्हाट वील बी फोकसिंग ऑन इन टुडेज सेशन. आई हैव 5 to 6 रूल्स टुडे, और उस रूल्स के ऊपर आप अगर एग्जाम में देखोगे जाकर, सो there have been questions on these rules for nouns. So let's begin, students. And ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस रूल रिलेटेड गलतियां आप एग्जाम्स में बहुत सारी कर जाते हो. इससे रिलेटेड गलतियां आप बहुत सारी कर जाते हो. सो लेट्स क्विकली look at this. Now, some nouns look plural but are singular in meaning, so they always take singular verbs. अब ये look plural का मतलब क्या है? So what we generally believe that when we add ses to nouns, noun के साथ ses लग जाता है, so it becomes plural. हम ये मानते हैं, ठीक है? That is what we believe. So, for examples, there are some subjects like mathematics, politics, economics, innings. There are some diseases like rickets, mumps, shingles. Physics is also a subject, statistics, billiards, darts, shambles. और इसका एक और आपको बड़ा ही easy सा example बताता हूँ, students. So when you have subjects that look plural, subjects like जहां पर अभी आप एक सेशन अटेंड कर रहे हो, subject like top rankers. Top rankers. It's a noun. It's a noun that looks singular, looks plural. It's a noun that looks plural, but it is singular in meaning. So it takes singular verbs. So not just top rankers, as I said, there are many such nouns. एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होता है जहां पर आप गलती कर देते हो? सो कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड दैट द फर्स्ट इनिंग्स of the match was or were boring. So अगर एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, और अगर आपको ये नहीं पता है that innings is a singular subject. Innings is a singular subject. So आप गलती कर बैठोगे. It would take a singular verb was. And not just innings, all the nouns that I said, names of some subjects पर आते हैं. So all the subjects that we discussed here, subjects like mathematics, physics, economics, statistics, names of some sports and games like chess, table tennis, darts, billiards, ये सारे. And there were some diseases like rickets, mumps, measles, shingles, rabies, tuberculosis, ऐसे बहुत सारे. So the moment you see such nouns,
डो नॉट गेट कैरिड अवे बाय द फैक्ट कि यार इसमें एस ई एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा. नो, दीज आर नॉट प्लूरल. Instead, they are singular in nature, and because they're singular in nature, they take singular verbs. All right. So that was our discussion around the first rules. As I said, मैं आज आपको सेशन में ना 5 से 6 रूल्स बताऊंगा. सिर्फ सिर्फ ये 5 से 6 रूल्स नाउन से रिलेटेड, और यही स्टूडेंट्स एग्जाम में बार बार आते हैं. एग्जाम में बार बार ये रूल्स आपको दिखते हैं. नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम, अभी हमने कुछ ऐसे नाउन्स देखे दैट लुक प्लूरल बट उनका मीनिंग सिंगुलर है. देन देयर इज द ऑपोजिट ऑफ इट, दैट देयर आर सम नाउन्स जो दिखते शायद सिंगुलर हैं बट देयर मीनिंग इज प्लूरल. सो दीज आर द नाउन्स दैट look singular but are these are the nouns, students, that look singular but are plural in meaning. But are plural in meaning. कौन-कौन से nouns हैं? So children, police, cattle, gentry, clergy, vermin, army, navy, staff, peasantry, cavalry, men, women, plural of mouse, that is mice, and many more. And many more. So because इन nouns के साथ SES नहीं लगा होता है, so we fall into this trap. We make this mistake कि हमें ये लगता है ये singular है, but trust me, these are not singular. ये सारे plural nouns हैं. And because they are plural nouns, they will always take a plural verb. So एक बार students इस list पर आप नजर बनाइए, and then we will discuss an exam oriented question for this as well. So this is these are some of the nouns, students. अब इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा हो सकता है? सो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है. Cattle are grazing in the field. सो ऐसा कोई बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में होता है. Yesterday, I found 4 mouses or mices in the godown. So when you have such examples, and now you know कि ये कुछ ऐसे nouns हैं students जो दिखते singular हैं but their meaning is plural, and they have no plural form as well. मतलब इनके साथ आप ses attach नहीं करते हो. So there is nothing like cattles. R तो ठीक लिखा हुआ है but cattles नहीं है. It should be cattle because cattle itself is plural in nature. Yesterday I found 4 mouses भी incorrect है, mices भी incorrect है. It should be mice because the plural form of mouse is mice. So इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस रूल के ऊपर दिखते हैं. The second rule that we discussed for today. The second rule that we discussed for today, that there are some nouns जो दिखते singular हैं but their meaning is plural.
And if their meaning is plural, they are bound to take plural verbs. इसके आगे कुछ भी डिस्कशन यहाँ पर नहीं बचता है. This was our rule number 2, students. Let's move to the third one, students, and this is again something which is very important. Very important. Now, what does the third one say? क्या कह रहा है third वाला? Some nouns exist only in plural forms. They don't have any singular form. So because they exist, because they are always used in plural form, they always take plural verbs. कौन से nouns हैं? Headphones, stairs, shoes, socks, pants, trousers, goggles, sunglasses, binoculars, spectacles, handcuffs, belongings, pajamas, shorts, outskirts, troops, forceps. So this is again super important because this line is important. They exist in plural form, so they take plural verbs. There is no scissors. अगर मैंने यहाँ पे if I missed out on scissors, ये भी आप इस set of words में add करते हो, students. So I'll give you people some time to look at what is there on the board. Here is here is students are rule number 3, that there are some nouns that always exist in plural form, so they always take plural verb. Exam में questions again, they don't ask you whether a noun is singular or plural. They'll ask you about the verbs that you need to use with these singular or plural nouns. In singular plural nouns के साथ क्या words आप use करते हो, that is something that matters, students. All right. So some nouns exist in plural form, and these are headphones, stairs, and all these that are written here. Next up, we have some nouns, the uncountable nouns that have no plural form. They exist only in singular form and they only take singular verbs. Uncountable nouns, students. So when we talk about uncountable nouns, ना आप बहुत सारे nouns यहाँ पे लिख सकते हो. Nouns like rice, sugar, butter, furniture. इस पर एग्जाम में क्वेश्चन काफी रहा है. Furniture, scenery, poetry, luggage. It's not written here. Luggage, traffic, dirt, dust, evidence, pottery, electricity, music, travel. So इस पर students कुछ questions देखते हैं. Just give me a second. The old man, the old man carried all his luggages, all his luggages on his own. Second sentence कुछ ऐसा है. I like the poetries of John Keats. So luggages, poetries, furniture, they sold the old furnitures. Now when you have such sentences, as I said कि यार ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीयूईटी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो जो मैं आपको आज के सेशन में जो भी 5 to 6 रूल्स बताने वाला हूँ अराउंड नाउन्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि नाउन के अभी तक
CUET में ज्यादा क्वेश्चन एनटीए ने नहीं पूछे, बट दैट डजंट मीन कि आगे नहीं होगा, और अगर होगा तो यहां से क्वेश्चंस हो सकते हैं. It should not be luggages, students. Luggage. It should not be poetries. It should be poetry. And then furniture. ठीक है. So once again, this is the list. This is the list of nouns. And not just the list, I would say जहां जहां पर भी आपको लगता है that if the noun is uncountable, इसमें आप एडवाइस भी ऐड करो, इसमें आप एडवाइस ऐड करो, इसमें आप इंफॉर्मेशन भी ऐड करो, इंफॉर्मेशन. So the moment you see that the noun is uncountable, the moment you realize that the noun is uncountable, आपके दिमाग में एक पॉपअप आना चाहिए कि यार अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता. और अगर प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता तो प्लूरल वर्ब का भी कोई चांस नहीं बचता है. Alright guys, that was our rule number 4 for today. And again, as I said, these are super important rules, guys. Then there is number 5, that there are some nouns that have same singular and plural form. There are some nouns that have same singular and plural form. Fish, sheep, deer, series, species, bison, green fly, dice, spacecraft, hovercraft, aircraft. If these nouns are used with SES, it means we are talking about different species or variations of these nouns. Now there might be some students who would say, sir, मैंने तो fishes भी सुना है, हो सकता है तुमने fishes सुना होगा, but when I say fishes, I mean there are different variety of fishes. ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई, so students get ready, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हो that is something very interesting. अब मैं आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाऊंगा which are not very good, but जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो चीज आप समझोगे. So imagine I have 3 aquariums, students. Let's say these are 3 aquariums. Now in the first one I have now what is the difference, students, between these three aquariums? First one may I would say I have 1 fish. In the second one I would say I have 4 fish. But in the third one I say there are 3 fishes. And this is the line that becomes important. यहाँ पर लिखा है कि अगर अगर इनका प्लूरल फॉर्म है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज होंगी. तो यहाँ पे आप फिश का टाइप देख पा रहे हो, एक सर्कुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, एक ट्रायंगुलर है. सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल के थ्रू आई होप ये इंग्लिश का डाउट आपको क्लियर हो चुका है. सो दैट इज these are some of the nouns, as I said, that have same singular and plural form. इनके साथ SES अगर कभी लग जाता है, so different types, different variety के लिए होता है. इसका अगर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप देखोगे तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है, while passing through the forest, while passing through the forest, I saw many deers. Many deers. So as I said, as we discussed, there's no plural form of deers. Simple बात है. So there cannot be deers. It should be deer. There cannot be deers, students. So this was our rule number 5 for today's session. And I have one more very important rule for you people. Common gender nouns such as teacher, student, doctor, child, advocate, farmer, worker, take pronouns of masculine gender. Pronouns and adjectives of masculine gender. सिर्फ pronoun नहीं, ऐसा लिख लो. Pronoun and adjectives of masculine gender. इसका एक एग्जाम्पल
इंपॉर्टेंट सा एक देखते हैं. Each student has to submit now you have four options: has, her, their, and its assignment on Friday. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो क्या करोगे? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, now you have a blank here. Now you have a blank here. If you have such a question and you have a blank, how would you decide कि सर क्या यहाँ पर होना चाहिए? Should it be it? Should it be her? Should it be his? Should it be there? So with common gender things, we use pronouns and adjectives of masculine gender. So it should be has to submit his assignment on Friday. His assignment on Friday. So this was Bacha Party, our rule number 6 for today's session. Nouns के ऊपर nouns के ऊपर यही डिस्कशन मुझे आज आपसे करना था. These were 6 super important rules. You can mark my words. Nouns में आप सब कुछ पढ़ने की उम्मीद अब नहीं कर सकते. That you'll go and study singular, plural, you'll go and study masculine and feminine. नहीं. बट अगर तुम्हें क्विक रिवीजन चाहिए था तो आप ये 6 रूल्स पढ़ सकते थे. Now, what is more important here is कि सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं होगा. So the practice session is also available on the portal. कुछ नहीं करना है. Once the session is over, आपको सेशन के नीचे एक लिंक मिलेगा. Just click on that link. अच्छे सारे questions practice करो. It is free of cost. कोई charges नहीं है. और एक टॉपिक अपना पक्का कर लो. So that was nouns. I'll see you guys tomorrow now with pronouns students. Thank you so much. Bye everyone.